Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing the level of organization. Now we will discuss our next level of organization, which is tissue level. Okay students, as we have discussed earlier about the cells. What are cells? Cells are formed due to the assemblage of the organelles. अब ये जो cells होते हैं ये organelles के assemblage के through बनते हैं और ये cell आपकी unit of life है. And in higher multicellular organisms, question arises होता है what are multicellular organisms? Basically multicellular organisms are those organisms which are made up of more than one cell. So in multicellular organisms, similar cells performing similar functions, they assemble together to form the group which is known as the tissue. It means कि आपके जो cells होते हैं similar cells होते हैं जो कि similar function perform करते हैं वो assemble होके क्या बना रहे हैं? Tissues बना रहे हैं. Okay students, as you can see in the diagram, similar cells performing similar functions assemble together to form the tissue. Okay students, each cell in a tissue carries on its ऑन लाइफ प्रोसेसेस. इट मीन्स कि आपके जो सेल होते हैं टिश्यूज़ के अंदर वो अपने लाइफ प्रोसेसेस अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और देन आपके जो फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू द टिश्यूज़ वो भी परफॉर्म करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ एंड द एनिमल टिश्यूज़. सो इन प्लांट टिश्यूज़ we will discuss the epidermal tissues and the ground tissues. There are many other tissues which are present in the plant tissues, but in this we will only discuss the epidermal and the ground tissues. So epidermal tissues, basically epidermal tissues are present outside the plant body. It covers the plant body और इसका function क्या है? It provides protection to the plant body. While the ground tissues, ये भी आपकी किस में present है? Plant tissues में present है. And what about their functions? Ground tissues helps in respiration, photosynthesis and protein synthesis. Now we will discuss the animal tissues, which are muscular tissues and the nervous tissues, and many other examples of the animal tissues are present, but we will discuss only muscular tissues and the nervous tissue. In muscular tissues, in which muscles contract and relax and they help in the movement of the body. It means कि आपके जो मसल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है? मूव करती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिश्यू इज नर्वस टिश्यू. बेसिकली नर्वस टिश्यूज आर फॉर्म्ड थ्रू द असेंबलेज ऑफ द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होती हैं? ये सेल्स हैं. जब न्यूरॉन्स असेंबल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं. बेसिकली नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, या आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, या आपकी बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प करता है. इसके अलावा ये आपकी बॉडी ने आपके इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्स शो करना है, इट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस टिश्यू.